very blessed and warm morning. Thank you, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to one and all. Respected Honorable Chairman, Honorable Principal Ma'am, honored guests, esteemed teachers, dear students, media partners, and everyone present with us. On behalf of International Delhi Discipline as their guiding path. Thus indeed a beautiful morning. Dedicated his life to maintaining peace, order, and the well-being of others for today's special occasion. Request our Honorable Chairman, Sir, Honorable Principal, for the special occasion to deliver a speech and create an awareness among us. Please give a warm round of applause for Master Suleiman. Thank you so much. School for giving me this opportunity. My name is Suleiman and today I am here to speak on the theme Say No to Drugs, Yes to Sports. This slogan is more than just words. It's a choice between destruction and discipline, between addiction and ambition. Sadly, in many parts of India, especially Punjab, Manipur, Uttar Pradesh and parts of Jammu and Kashmir, drug addiction is a rising problem. Lakhs of young people are losing their future to harmful substances. Drugs may seem like a quick escape, but in reality, they destroy health, confidence and dreams. Through hard work and discipline, they made India proud. They are proof that sports lead to fitness and success, not drugs. India is a land of sports. We love cricket, kabaddi, badminton and hockey. These games teach us teamwork, courage, mental and physical strength. Sports keep us away from bad habits and bring out the best in us. Let me end with a short poem. Don't pick the poison, don't fall for the lie. Choose the field where dreams can fly. Run with hope, play with pride. With sports in your heart, let success be your guide. Sports and no to drugs. Any occasion or any events is incomplete without cultural events. Now, I'd like to invite our cultural team to present a short skit and a rope dance to mark the occasion. Asan darbadar habarkot fera. May bariu gam, tumasan pagani. Mari, tive at markas titsini, perchi final exam. Medina cigarette. Ya tu क्या इस डिवाइस से शुरू बात कौन से दे? मुझे मेरे पास ना मुझे मेरे फोन में ना मुझे मेरे पास फोन दिस लोग को अरे मम्मी जी क्यों हीरो कहती सुरेश दरबदरी मस हीरो तो परनस मस जीरो सोए आसे दरबदर कुंजाई नाचान मारा स्लोगन जिससे नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ दिल साथ कतल अमली तौर पको इस बातों को गवर्नमेंट से ड्रामा आपको बना होता है इट वाज अ फैंटास्टिक मूव वेल मैनेज्ड कब खुश हुए एक तो हादी साहब के कैरेक्टर पे वो हादी इन द ड्रामा आपका रोल क्या था भाई खसना ये बच्ची सन युद्ध सन even though she is a daughter like इम्स उस अपना जी कैरेक्टर युद्ध इम्स उस कौन में जिसके जिससे माना जिसके जिससे कारण एक्टिविटी है इसमें हम किसको देखकर क्यों खुश हुए इस बात पे गौर करना क्या इसकी अच्छी ग्लोरीफाई कराना तीन चीज आज सोसाइटी में अंदर की बात नहीं है मैं बाहर की बात कर रहा हूँ हम बाहर वही चीज ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम उस चीज को तरजीह दे रहे हैं उस चीज को हम ले रहे हैं ट्रेंड बना रहे हैं यह मजा सब मस्ती आज सब मस्त हुए इसको देखकर he was holding a cigarette in her hands she was holding क्योंकि इसका हादी नाम था तो she was female भारत को था तो यस एंड एक साथ सिगरेट होता है इस साथ इसके सबने तालियां मारी सबको हैरान होना चाहिए था इस पे दो इट वाज ड्रामा ये उसने इंटेंशनली कैरेक्टर पालन किया तो उसकी दिल में बट इस पे हैरान होना था सबको कि रंजित के रोट सिगरेट आई तो इबरत आप करने जैसे तो
चैरिटी बिगिनिंग्स एट होम तो कोई अभी बोल रहा था, यही होता है अगर अस दिमो ना पन्नन बच्चन ये तरबियत से सिगरेट अथस के रड़न जिसकी ये कितनी बड़ी गलती है, ये कुछ शर्मनाक शर्मसार बात है जो बाहर हम नहीं देख पा रहे हैं। पिछली बार में यहाँ आया था, ट्रैफिक पे प्रोग्राम था, तो मैंने तब एक मिसाल दी थी कि अगर रोज पेवान बच्चा लड़का सोन जवान टीन एज जिसको हम बोलेंगे या 25 बिलो 25 इयर्स ऑफ एज वो जवान ही होता है, तो इट्स आल्सो रूल्स में गर्ल्स चलावन साइड साइड और बुजुर्ग पकान ये चल करान इस चनम्स अकल से पका लोग तक से इसमें कसम नहीं ये चलता है ये कूदा दूर गए स्पीड से हम उसी में खुश होते हैं और ये इतना समझा तब से तो इसमें संग खुश उस चीज को हम ग्लोरीफाई नहीं करना है, हमें इस चीज पे हमें काम करना है। अगर नेबर पे का सिगरेट न चमा अभी मेरे आई विल कोट वन एग्जांपल, मेरा एक बैचमेट है मुझसे पहले यहाँ जुपुरा में रहे हैं, आप सब जानते हैं, नाम नहीं लूंगा। तम सो आप पूरा आदत सो दो सिगरेट दो या त्रेलेट चमा और इंसान मेरी पूरी लाइफ में 15 वरी दिन में जब 15 साल में मैंने उसको एक बार देखा। सो जी अचानक साथ में तब से कुछ सुनने उससे मुश्किल में उसकी आदत है, तुम मेरी बुरा आदत मुझे सिगरेट चमा दो, वो मेरे सामने नहीं पी रहा था, तो वो मुझसे पहले ही इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो चीज होती है उसको बोलते हैं मैनर्स। उसको Chairman sir, Honorable Chairman sir, and special guests with us today, DSP Mr. Ashik Hussain, and our guest of honor, another guest is there, SHO sir, and Shahwan sir also here present today. So, I think once he was delivering his speech, SHO sir, I was thinking about our children, like those who were dramatized here, like this, the skit, you know. The message behind it is very good, but when you are representing what is the motto here, what is the vision here, that has to be very, very clear in your thought. When you have to act, when you have to say your things, and when you have to show your expressions and emotions with your body gestures. Maybe you are not thinking in that way, right? Maybe no negative things are there in your mind. Maybe in just this expression only, you are just smiling for the act. I can understand as an educator, as a principal, that like this is a very you can say special thing to you, like when you are representing here. But you have to take it seriously when you are with the emotions, like say no to drugs. It's a very alarming situation. It's a very serious thing. So we have to say our thing with our gesture on a very, very serious note. They said so many things, and I also shared many things, our experience also, and by the evening time, you will say it was just a program. No, it is not just a program for today. It will go on and on. Not for today only. This will be from today, we have to take a first step. Say no to all the bad things. Maybe it's an abusive language, maybe it's a drugs, maybe anything other thing, whatever is coming in your mind. So what are the positive things? We have to go for yoga, we have to go for a walk, we have to have inculcate good reading habits, that we can start. When you will read good books, then your mind will occupy that space and you will not think the negative thoughts. Good afternoon to all the students. Before initiating my assertions and interaction, I would like to thank the Honorable Chairperson of the school, the Principal of the school, and my friend Shahwan, and all of the students, all of the faculty who have taken time and have organized this important program on short notice. Thanks a lot. Thank you very much. First of all, I'm going to ask a question to all the students, sir. I'm a policeman, so I like to have an interaction with you. If I'm asking you something, I'll appreciate your response on that. Do you think we do have such kind of problem which is known as drug addiction in our society? Yes, sir. Have you experienced it
in your surroundings, in your localities, in your mohallas? What sort of drug addiction or what sort of substance abuse you have seen in your life? What sort of drug abuse? Cigarettes and cocaine and heroin and what is that? Brown sugar is that? Heroin, weed. You people in our society, and you might have experienced with your friends, your colleagues, your neighbors who might have indulged in substance abuse at any given point of time. So what do you think? What is the behavior which is leading any person to consume a particular drug? What is the pathway? That if there's an individual, an educated boy, educated girl, why is he indulging in drug peddling, or why is he, becoming the victim of substance abuse? Do you have any idea about that? Or has anxiety and he's finding it, using it as an escape route. Any other reason? No, please. The thing is that an individual is manipulating or regulating his bodily requirement of pleasure and pain. Either a person wants to escape from the pain and wants to get instant gratification in the form of pleasure in order to stimulate his body, like dopamine, GABA, etc., etc. There are many neurotransmitters which are operating inside our body. So we are actually manipulating with those neurotransmitters by consuming drugs. Okay? Excellent. Tell me, how should you take safety measures to avoid that pathway of getting into drug trap? First step जो होता है वो होता है observational phase. यानी हमें अपने family members को observe करते रहना कि उनमें कोई ऐसी awkward habit तो develop नहीं हुई है that he needs constant monitoring or he needs treatment. For example, आप जो ही शाम को घर जाते हैं, हमारे बच्चे वो maximum time अपने parents के साथ गुजारते हैं, family के साथ गुजारते हैं. All of a sudden जो बंदा drug consume करना start करता है, उसको तन्हाई पसंद होती है. वो जाके अपने रूम में बैठेगा, उस दिन फैमिली के साथ नहीं बैठेगा. कंटिन्यूसली उसको मजा आएगा इंडिविजुअली इन अ सॉलिट्यूड मैनर में अपने रूम में बैठने के लिए. दूसरी बात, ऑल ऑफ अ सडन उसके जो दोस्त थे वो चेंज हो गए. पहले वो आता था हादी के साथ, ठीक है. अगर हादी अ गुड कैरेक्टर एंड एनर्जेटिक गर्ल जिसने अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे वंडरफुली प्ले किया, जिस तरीके से उसको टीचर ने बोला था प्ले करने के लिए, जिस तरीके से उसको टीचर ने सिखाया था कि आपको यहाँ पे कौन सा रोल प्ले किया, she has shown a great response and a phenomenal performance by Hadi. तो ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इसके दोस्त चेंज. पहले इसके थे एग्जांपल 2-4 नाम आप जो भी ज़हन में आपके आएंगे वो इसके दोस्त थे, लेकिन जो ही इसने ड्रग एडिक्शन मतलब ड्रग एडिक्ट हो गया, ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन इसका सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल चेंज होता है. राइट? क्यों चेंज होता है? नेशनल DPS जो हमारा स्कूल है उसमें एक प्रोग्राम है ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स को हम कैसे रोक सकते हैं. तो उसी के लिए प्रोग्राम है और इसके जो चीफ गेस्ट है हमारे DSP साहब हैं, शासिक इस एरिया के हैं, वो आए हैं. तो आपने देखा कि इसमें सभी बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए हैं, डिबेट किए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है. तो आपने भी हमारे मुल्क में और कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इसकी ड्रग्स की जो आदत है, ज़रूरत है, ये बढ़ रही है. तो हम सब का फ़र्ज़ है कि इसको रोकें. अब ये शुरुआत होती है बच्चों से. बच्चे की जो हम समझते हैं, जो हमने देखा कि तीन लोगों की इसमें जिम्मेवारी है. एक स्कूल की, एक पेरेंट्स की है, एक हमारी लॉ एजेंसी है उनकी. पहले से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो पेरेंट्स की, क्योंकि स्कूल में बच्चा ड्रग नहीं ले सकता. हमारे पास सुबह बच्चा आता है और वो अपने सारा दिन अपनी क्लासेस में होता है. 20 मिनट की उसके पास एक लंच ब्रेक होती है जिसमें वो अपना खाना वगैरह नहीं स्नैक्स लेता है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी स्कूल कि बच्चा वहाँ के ड्रग ले सकता है. लेकिन अब स्कूल की क्या जिम्मेवारी है, क्योंकि ये अगर वबा फैल रही है
اس کی کاؤنسلنگ ہمارا فرض ہے کہ بچے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے اسکول میں، لیکن ایک کاؤنسلنگ کی جائے. ہمیں ایک اچھے کاؤنسلر اسکول کو رکھنے ہیں جو بچوں کو اس بارے میں اویئر کریں، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو جس طرف آپ دماغ لے جائیں گے اس طرف چلا جائے گا. تو اگر ان کو وقت پہ مہینے میں 1 بار 3 بار 4 بار کاؤنسلنگ ہو اس بارے میں کہ یہ غلط چیز ہے تو بچے اس کو نہیں. پھر پیرنٹس کا کام ہے کہ جب بچہ گھر آتا ہے اس کو ٹائم دے اور دیکھے اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے کہ بھائی کیونکہ وہاں سے نکلا اسکول سے گھر چلا گیا، اب گھر میں وہ چیز یہ لیتا ہے یا باہر نکلتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس پہ نظر رکھنی ہے پیرنٹس کو کہ اس میں کیا. شام کو بیٹھیں ہر گھر میں، کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمارا تھا اصول کہ سب لوگ کھانا گھر میں اکٹھے کھائیں. آج کل وہ عادت بھی ختم ہو رہی ہے، ماں باپ الگ کھانا کھا رہے ہیں، بچے الگ کھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے گھر میں سب کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ختم ہوئی تو اس سے دوسری چیزیں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جو ہماری یہ اپنی چیزیں ہیں یہ اچھائی کے لیے بھی ہیں، لیکن ان کو ہم اچھائی کی طرف لے جائیں تو اچھے ہیں، برے کی طرف لے جائیں تو برے ہیں. تو شوکت صاحب آپ سے ایسا نہیں پاسبل ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی ڈرگ بیچ رہا ہے اور ہمارے کنسرن جو لا ایجنسی ہے اس کو پتہ نہ ہو. یہ 100% ان کو شاید کچھ دیر کے بعد پتہ چلے لیکن پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اگر اس کو نہیں کنٹرول کرتے اور اس کے بعد اس کو اور اگر وہ کر بھی لیتے ہیں پھر ہمارا لا اتنا کمزور ہے کہ اس کو سزا نہیں ملتی. جو اس کا ہے مجرم اس کو ہم سزا سے بچ جاتا ہے، وہ کئی چیزوں سے ہے وہ اس کو سزا نہیں دے پاتا. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں 1 بار لگا دیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. میں نے کہا کہ آپ کو کنٹینیو پروگرام اسکول میں رکھنے ہیں، ہر اسکول میں آپ کے پاس. میں تو کہوں گا ویکلی ایک جو آپ کی کاؤنسلنگ پروگرام ہے ہمیں 1 گھنٹے کا سارے اسکول میں بچوں کو. ان چیزوں پہ اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کے بارے میں بچوں کو سمجھانا چاہیے. آج کل بچے بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں. جب تک ہم اس کو صحیح اور غلط نہیں بتائیں گے. دیکھیے آج بچے کو میتھ پڑھا رہے ہیں، میتھ پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے بچے کو غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے.